न्यूरोएनाटमी फ्रॉम स्नेल क्लिनिकल नोट्स हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 के, विच वाज द चैप्टर ऑन क्रेनियल नर्व्स। एज यू नो कि मैंने ये जो क्लिनिकल नोट्स की सीरीज न्यूरोएनाटमी के लिए स्टार्ट की है, उसका पैटर्न ये है कि चैप्टर का टेक्स्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। सो मेरी मोर देन आई थिंक 2 आवर लॉन्ग वीडियो क्रेनियल नर्व्स की फ्रॉम स्नेल न्यूरोएनाटमी मेरे चैनल पर मौजूद है। Now today I am going to cover cranial nerves के clinical notes. Okay, so general considerations. The 12 pairs of cranial nerves supply information to the brain from outlying receptors organs and bring about changes in the peripheral effector organs by means of appropriate motor nerve. So that's the job of the cranial nerve, to give you, and there are 12 pairs, we know that, okay, to give motor orders to different parts of your body. Unfortunately for the student, the nerve cells are not arranged simply. Now that is a line which I like very much, because students के लिए बड़ा अच्छा होता है ना, बड़ा आसान तरीके से वो अरेंज होते हैं, but they are complicated way में arranged है। Spinal cord में it's simple, but for cranial nerve nuclei that is very complicated arrangement. But they are grouped in the form of nuclei that are found in different situations at different levels of the brainstem. और ये हमने already जब ये चैप्टर किया था तो बात की हुई है। Moreover, whereas spinal nerves possess afferent somatic fibers, afferent visceral fibers, efferent, अच्छा अब ये अब words I'm assuming कि आपने मेरी वीडियो देखी हुई है इस चैप्टर की टेक्स्ट की। So I'm assuming कि आपको पता है कि what are afferent fibers. Afferent fiber is anything coming towards the central nervous system. I am assuming that you know what are efferent fibers. Efferent fibers are anything which are going away from the central nervous system, okay? So if it is going towards the somatic supply, it's efferent somatic fiber. If it's going towards the viscera, यानी कि आपके internal organs, it is known as the efferent visceral fibers. And when the central connections of different cranial nerve nuclei were discussed in the previous section, a simplified practical version was given, since many of the precise connections of the cranial nerve nuclei are still unknown. So पूरे चैप्टर 11 में जो मैंने आपको डिफरेंट हर नर्व के लिए कुछ न्यूक्लियाई मैंने आपको बताए थे, जिनसे न्यूरॉन्स निकल के फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिसेमिनेट होते हैं, दैट्स अ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन, बिकॉज द रियल वर्ल्ड कनेक्शंस हमें पता भी नहीं है कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, ओके? बिकॉज द डेलिकेट मूवमेंट ऑफ द आईज, the larynx and the face require carefully integrated muscle action and fine control of the muscle tone. It must be assumed that the motor nuclei of various cranial nerves receive input from the cerebellum, the red nucleus. So यहाँ they are trying to build up an environment और ये बात कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि the arrangement of the cranial nerves and their nuclei and their interaction with each other is a very very complex phenomena, okay? 3 points of clinical value should be remembered. Number 1, bilateral corticonuclear connections are present for all the cranial motor nuclei except the part of the facial nucleus that supplies the muscles of the lower part of the face, and that part of the hypoglossal nucleus that supplies the genioglossus muscle. So basically ये कह रहे हैं कि there are corticonuclear connections, which means कि cerebral cortex और जो nuclei है cranial nerve के, उनके आपस में काफी strong interaction है, apart from few exceptions, और वो 2 exceptions ये हैं। The cranial nerves that possess afferent sensory fibers have cell bodies that are found in the ganglia along the course of the nerve. These are equivalent to the posterior root ganglia. आपको पता है ना, spinal cord में जो भी information आती है from any part of the body, it comes to the spinal cord by the posterior root ganglia या posterior roots है। अब बिल्कुल इसी तरह cranial nerve में भी जो sensory information आएगी, that first goes through a ganglia which is present somewhere in the root of the afferent fibers. Then number 3, in situations where the cranial nerve nuclei are close together, it is very rare for a disease process to affect one nucleus only. So अगर एक nucleus मेरे पास यहाँ है, उसके साथ कोई दूसरा nucleus है, so if this nucleus is affected by any pathology, this is also affected. So they are affected in groups. For example, the cell groups of nucleus ambiguus serve the glossopharyngeal nerve. The vagus in the cranial root of the accessory nerve, and functional loss involves all 3 nerves because they lie so close to each other. So these are 3 generic type of clinical considerations. Now concerning the clinical examination, the systemic examination of 12 cranial nerves is an important part of the examination of every neurologic patient. In fact, in every patient you have to do a testing on the cranial nerves.
सो यू हैव टू चेक कि उसकी क्रेनियल नर्व्स ठीक काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन. और आपके एग्जाम्स में क्रेनियल नर्व की एग्जामिनेशन पे अगर बात नहीं हुई तो समझो आपका एग्जाम ही नहीं हुआ. लाजमी बात होती है. ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट बिट, olfactory nerve. First, determine that the nasal passages are clear. So this is about the examination. So if the person is sitting in front of you and that's the nose, so just look inside the nose grossly. कोई चीज़ फंसी हुई तो नहीं है, कोई impacted तो नहीं है, कोई nasal septum deviate तो नहीं किया हुआ. If everything is clear, then apply some easily recognizable aromatic substance. कोई अच्छी सी खुशबू. So for example, गुलाब, पेपरमेंट ऑयल, क्लोव, टोबैको, ये तमाम वो चीज़ें जो इजीली रिकग्नाइज कर लेते हैं पेशेंट. सो ये पेशेंट को सूंघाई जाती हैं, उसके नज़दीक ले जाई जाती हैं. आस्क द पेशेंट वेदर ही और शी कैन स्मेल एनीथिंग. इफ सो, आस्क द पेशेंट टू आइडेंटिफाई द स्मेल. उसके नज़दीक लेकर बताओ भाई क्या चीज़ है. ओके, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट फूड फ्लेवर्स डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ द स्मेल एंड नॉट द सेंस ऑफ द टेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो यानी क्लोव है, अगर लॉन्ग जिसे हम कहते हैं, वो पेशेंट की नोज के नज़दीक ले जाएंगे तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि दिस इज क्लोव. क्योंकि कुछ पैटर्न्स बहुत ही रूटीनली पेशेंट अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा होता है. सो दे शुड बी रिकग्नाइजेबल. दैट्स हाउ यू चेक द olfactory nerve. इफ द पेशेंट टेल्स यू और द पर्सन टेल्स यू दैट या इट इज दैट बिट और वो वही चीज़ है, देन द olfactory nerve इज वर्किंग फाइन. ये कंडीशन है जिसको हम कहते हैं बायलेटरल एनाउस्मिया. इट कैन बी कॉज बाय डिजीज, यानी दोनों तरफ से, नाक नॉस्ट्रल के दोनों तरफ से द पर्सन इज अनेबल टू सेंस स्मेल. इट कैन बी कॉज बाय डिजीज ऑफ olfactory mucous membrane such as common cold और rhinitis. यानी अगर नज़ला वज़ला हो रहा है, एलर्जी हो रही है, तो इन्फ्लेमेशन है ऑफ द olfactory epithelium inside the nasal apparatus और बंदा फिर olfactory nerve सेंस नहीं करेगी and the sensation of smell is gone. That happens in bilateral, दोनों तरफ से फारिग. Now, unilateral anosmia can result from disease affecting olfactory nerve, bulb or tract of one particular side. A lesion of the olfactory cortex on one side is unlikely to produce the complete anosmia because दूसरे साइड का cortex काम कर रहा होता है, fibers decassate करते हैं. यानी अगर this is my nose and signals from the nose are going to one particular part of the brain and signal from the other part are going to the other particular part of the brain, so they crisscross with each other. So fibers यहाँ से यहाँ भी जाते हैं, यहाँ से यहाँ भी जाते हैं. So even if one part is not working, the other half of the nose is also feeding fibers to the remaining bit of the brain which is normal. Cerebral tumors of the frontal lobe or meningiomas of the anterior cranial fossa can produce anosmia because they press the olfactory bulb or the tract. So these are all the conditions, all the clinically relevant stuff which you have to know about the olfactory nerve. Okay, bilateral anosmia, उसकी causes क्या है? Common cold and allergies. Unilateral anosmia के different causes आपको पता होनी चाहिए, right? Now let's move our discussion to the next cranial nerve, which is the optic nerve. First, ask the patient whether he or she has noted any change in the eyesight. तो भाई पेशेंट से पहला सवाल आपको भाई दिखने में कुछ मसला या कोई चेंज हुआ है. Visual acuity should be tested for near and distant vision. वो आप कभी गए चश्मे, आपने अगर किसी के चश्मे लगे हुए, मेरे तो लगे हुए हैं. So जब आप ऑप्टिशियन के पास जाते हैं, सो देयर इज लाइक अ इल्यूमिनेटिंग बॉक्स जिस पे नंबर्स लिखे होते हैं ना, पहले बड़े बड़े फिर छोटे छोटे होते जाते हैं. एंड यू आर सिटिंग हियर ऑन चेयर एंड यू आर व्यूइंग दिस. सो यू टेस्ट इट योर विजन फॉर फार विजन एज वेल एज फॉर नियर विजन बाय रीडिंग समथिंग. सो इस हिसाब से वो ग्लासेस चेंज करते जाते हैं. दे डू इट अनलेस you clearly see what is written here. So that's how you check the visual acuity. Near vision is tested by asking the patient to read a card with a standard size type. और जो डिस्टेंट है उसमें आप बंदे को दूर बिठा देते हैं और उसको एक इल्यूमिनेटिंग बोर्ड पढ़ने के लिए देते हैं कि पढ़ लो भाई. डिस्टेंट विजन का चेक इज डन बाय आस्किंग द पेशेंट टू रीड द स्नेलन टाइप. सो ये जो होता है ये स्नेलन चार्ट कहलाता है. इस तरह का जो चार्ट बना होता है, आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने ये चेकअप अपना करवाया होगा आई का. सो इफ यू आर एबल टू रीड द स्नेलन चार्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 feet, यू आर गुड. अदरवाइज अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वो डिफरेंट ग्लासेस लगाते जाते हैं और आपकी एक्विटी उस हिसाब से फिक्स करते हैं. देन तो ये तो हो गई इक्वेरी. इक्वेरी का मतलब ये है कि आपको क्लैरिटी के साथ 2 point डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई चीज़ क्लियर नजर आ रही है या नहीं. सेकेंड चीज, सो दैट वॉज फर्स्ट. नाउ सेकेंड चीज जो आपको कंफर्म करनी होती है आई टेस्टिंग में ऑप्टिक नर्व के लिए, दैट इज विजुअल फील्ड विच शुड बी देन टेस्टेड.
The patient and the examiner sit facing each other. So if this is you, आपके बिल्कुल सामने आपका डॉक्टर एग्जामिनर बैठ जाए. So they face each other. ये आपकी आंखें हैं और ये इसकी आंखें हैं, right? The patient and the examiner sit facing each other at a distance of about 2 feet. आप दोनों के दरमियान काफी डिस्टेंस है. The patient is asked to cover the right eye. यानी अपनी सीधी आंख पे हाथ रख दो या कोई कार्ड दे देते हैं वो रख दो. And the examiner covers his own left eye. सुनिए गौर से. यानी डॉक्टर अपनी लेफ्ट आई बंद कर देगा और जो बंदा चेक करवाने आया है उसकी राइट आई बंद हो गई. ओके. द पेशेंट इज आस्क्ड टू लुक इनटू द प्यूपिल ऑफ द एग्जामिनर्स राइट आई. ऑब्वियसली जब ये एक दूसरे के सामने होंगे तो इसकी राइट आई उसकी लेफ्ट आई के सामने होगी, इसकी लेफ्ट आई उसकी राइट आई के सामने होगी. ऐसे ही है ना. तो यहाँ हमने पेशेंट की कौन सी आई बंद करी है? राइट आई बंद कर दी है. और अब पेशेंट की कौन सी आई बच गई? पेशेंट की लेफ्ट आई बच गई. सो द पेशेंट इज आस्क्ड टू लुक इनटू द प्यूपिल ऑफ द एग्जामिनर्स राइट आई. क्योंकि एग्जामिनर की यानी डॉक्टर की लेफ्ट आई बंद की हुई है तो राइट आई खुली बच गई. तो ये लेफ्ट आई से उसकी राइट आई में देखता है. A small object is then moved in an arc around the periphery of the field of vision. The patient is asked whether he or she can actually identify कि कोई चीज़ मूव हो रही है कि नहीं. So ये दोनों आमने सामने बैठ गए, एक एक आंख बंद कर ली. कौन सी कैसे वो बता दिया मैंने यहाँ पे ऊपर. अब डॉक्टर अपना हाथ मूव करता है फ्रॉम द पेरिफेरी, दूर से लेके आएगा नज़दीक की तरफ और साइड की चीज़ हमको नज़र आ जाती है ना. सो यानी अगर मैं ये खड़ा हुआ हूँ, सो मेरी ये दो आंखें हैं और यहाँ मेरे कोई मूव करेगा तो मुझे नज़र आ जाएगा, यहाँ मेरे कोई मूव करेगा तो मुझे नज़र आ जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड विजन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन या विजन फील्ड. तो ये चेक करने के लिए एक एक आंख बंद करके और दूर से हाथ या कोई ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ लाया जाता है. एंड वी सी हाउ द पेशेंट इज एबल टू रिकॉग्नाइज कि इफ समथिंग इज मूविंग towards the patient or not. The extent of the patient's field of vision is compared with the normal examiner's field. यहाँ ये assume कर रहे हैं कि डॉक्टर नॉर्मल है, पता चले डॉक्टर की भी जो फील्ड है वो डिस्टर्ब्ड है. Then the other eye is tested. The clinician must be careful not to miss less or impairment of vision in the central area of the field, which is very important. अभी देखते हैं उसके बारे में. Now visual pathway के lesions. अब ये तब समझ में आएंगे जब आपने पूरा visual pathway ढंग से पढ़ा हुआ होगा. ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में जब हम cranial nerves का टेक्स्ट कर रहे थे तो बताया था किस तरह से. If this is a person and we are looking at a person, पूरा visual pathway हम उसका डिटेल में देख रहे हैं. So there are two eyes obviously. If this is one eye, this is the other. So for example, I'm saying this is the right eye and this is the left eye, and I'm telling you कि right side के जो light rays हैं, they are going right side से they are so that is the right field of vision. Okay, so the rays are going not only to the right eye but they're also going to the left eye, and then from here the pathway goes down. Optic chiasma, optic nerve pehle, then optic chiasma, and then optic tract, and then there are lateral geniculate body and optic radiation, and then the visual cortex. So अगर मैं आपसे पूछूं कि right side की जो field है उसकी विजन का जो मैसेज है या जो रेज हैं वो राइट साइड के ऑप्टिक नर्व में है या लेफ्ट साइड के ऑप्टिक नर्व में है. सो इसका आंसर ये है दोनों साइड पर, और ये हमने डिस्कस किया ऑलरेडी डिटेल में. ओके, सो यू नीड टू नो द कंप्लीट पाथवे इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लीजन. सो लीजन ऑफ द ऑप्टिक पाथवे मे हैव many pathologic causes, expanding tumors of the brain and neighboring structures such as pituitary gland. They will compress different parts. They can compress different parts of the optic pathway. So for example, अगर विजुअल पाथवे में इस जगह पे ब्रेन सब्सटेंस में कोई ट्यूमर है, सो दिस विल बी ऑप्टिक chiasm विल बी कंप्रेस्ड. सो एनीथिंग कंप्रेस्ड विल हैव अ लीजन. ओके, अच्छा जी. सर्कमफेरेंशियल ब्लाइंडनेस क्या चीज होती है? Circumferential blindness may be caused by hysteria or optic neuritis, यानी inflammation of the optic nerve. Optic neuritis may occur following spread of an infection from the sphenoid ethmoid sinus. So, in fact, simple sinusitis can lead to optic neuritis. The optic nerve is infected as it passes through the optic canal to the orbital cavity. So, basically, you feel an episode of blindness. But if it is treated, it goes away. Total blindness of one eye. Total blindness of one eye would follow complete section of the optic nerve. So, अगर ये optic nerve, कोई भी एक optic nerve मैं completely काट दूँ, so completely gone. So if it's completely gone, you have complete blindness. Okay, that's an important point. What is nasal? अब ये गौर से सुनो यार. Nasal hemianopia. So nasal hemianopia would follow a partial lesion of the optic nerve. Not the optic nerve, the optic chiasma on its lateral side. So now let's move back to this diagram. So here you see, this is the diagram that you have to master, and here we are talking about different lesions. So सबसे पहले ये pathway आपको पूरा clear पता होना चाहिए कि how the light rays are entering into the eye, into the right eye and into the left eye. So the right eye is getting
light rays not only from the right field but also from the left field. ये left field है, तो यहाँ से भी light rays hit कर रही हैं into the right eye. And then we have the optic nerve, optic chiasm, and the whole tract. Now once you master the whole pathway, जो मैंने जब टेक्स्ट पढ़ाया था तभी बात की थी, अब कुछ लीजन समझना है. सो फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 इज राइट साइडेड circumferential blindness due to retrobulbar neuritis. So look at number 1, और ये राइट फील्ड के डिफेक्ट्स हैं. सो what you are studying here is right-sided circumferential blindness. So you see circumferential blindness, and that's usually because of inflammation. So that is number 1, inflammation of the optic nerve, and you see such type of blindness जिसमें circumferential is, so central blindness नहीं है. And then number 2 is complete blackout. You see, this is complete blackout, and it happens when there is complete transection of the right nerve. So right side की complete blindness. So what happens at lesion number 3, which is actually this lesion that I'm talking about, इसमें आप देखें right side का जो temporal portion है that is fine, temporal field is okay. उसका reason ये है क्योंकि temporal field से जो fibers हैं वो move करके fall करते हैं, not the fibers but the light rays. So that is the temporal field and that is the nasal field. टेम्पोरल फील्ड के लाइट रेज देखें इस जगह पे फॉल कर रही हैं और यहां से ये निकल जाती हैं टू द ऑपोजिट साइड. सो टेम्पोरल फील्ड इज एक्चुअली गोइंग टू द ऑपोजिट ऑप्टिक नर्व. तो टेम्पोरल फील्ड इज ओके क्योंकि ब्लॉकेज यहां पे हुआ है. इफ दिस इज द ब्लॉकेज देन राइट साइड का नेजल पोर्शन अफेक्टेड होगा. सो द नेजल पोर्शन जहां से लाइट रेज आ रही हैं एंड दिस इज देन गोइंग इनटू द सेम ऑप्टिक नर्व. सो इफ दिस इज द रीजन, तो राइट साइड पे टेम्पोरल रीजन विल बी फाइन बट नेजल part will be affected. So this is what is written here as nasal hemianopia. So what happens कि nasal hemianopia would follow a partial lesion of the optic nerve on its lateral side. अब ये अगर right side की optic nerve damage हुई है, so यहाँ you see the blindness on the nasal side. अगर मैं ये scenario turn कर दूँ and if I tell you कि the blockage is at this level, so if the left side of the optic tract is damaged, सो लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक में क्या क्या आ रहा है? लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक में एक तो राइट साइड से टेम्पोरल रेज आ रही हैं और लेफ्ट साइड का कौन सा विजन अफेक्टेड होगा देखें ये लेफ्ट साइड पर. अगेन ये लेफ्ट आई है, दिस इज द टेम्पोरल फील्ड एंड दिस इज द नेजल फील्ड. जो नेजल फील्ड लेफ्ट साइड की विजन की लाइट रेज होंगी दे आर फॉलिंग हेयर एंड दे आर ट्रेवलिंग इनटू द लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक. सो लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक में बेसिकली कौन कौन से फाइबर्स गुजर रहे हैं? एक तो राइट साइड के फाइबर्स गुजर रहे हैं. राइट साइड के वो फाइबर्स जो टेम्पोरल फील्ड से आ रहे हैं दे आर कमिंग हेयर, और लेफ्ट साइड के वो फाइबर्स जो नेजल फील्ड से आ रहे हैं यानी नेजल फील्ड की रेज को कैप्चर कर रहे हैं दे आर गोइंग देयर. सो इफ लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक इज गॉन, तो this patient will have difficulty seeing the temporal vision of the right side and nasal vision of the left side, because nasal side की जो sensations हैं they will be carried in the left optic tract if we are talking about left eye. So the point is कि आपको जब ये सिम्टम्स पेशेंट के आप देखेंगे ना कि इफ़ दिस इज सर्कमफेरेंशियल डैमेज देन यू नो दैट द डैमेज इज एट द लेवल ऑफ द इन्फ्लेमेशन या ऑप्टिक नर्व. इफ़ वी टॉक अबाउट टोटल कंप्लीट ब्लाइंडनेस, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्टिक नर्व कम्प्लीटली ट्रांजैक्ट हो चुकी है या कम्प्लीटली प्रेस हो चुकी है. इफ़ वी टॉक अबाउट ओनली नेजल हेमिएनोपिया, सो दिस डायग्राम शोज दिस इज द नेजल साइड, दिस इज द टेम्पोरल साइड फॉर राइट साइड, और लेफ्ट साइड के लिए दिस इज द नेजल साइड एंड दिस इज द टेम्पोरल साइड. सो इस पर्टिकुलर डायग्राम को अगर मैं देख रहा हूँ तो दिस इज़ द राइट साइड एंड नेजल साइड इज़ गॉन. अब आपको ये पता होना चाहिए कि राइट साइड के जो नेजल फाइबर्स हैं वो किस तरह ट्रैवल करते हैं और टेम्पोरल फाइबर्स किस तरह. सो राइट आई का टेम्पोरल विजन के जो सेंसेशंस हैं, जो लाइट रेज हैं, वो ट्रैवल करेंगी टू द अपोजिट साइड. सो राइट साइड का टेम्पोरल विजन लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक पे डिपेंडेंट है एंड वाइस वर्सा फॉर द लेफ्ट आई. सो इफ़ यू हैव अ वेरी गुड ग्रास्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर, तो आपको क्लिनिकल सिम्टम से ही पता लग जाएगा कि डैमेज कहाँ हुआ है. सो इफ देयर इज कंप्लीट ब्लाइंडनेस, इट इज कंप्लीट ट्रांजैक्शन और कंप्लीट कंप्रेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व. इफ दिस इज एट द लेवल ऑफ द पार्शियल ऑप्टिक ट्रैक डैमेज, जिसमें सिर्फ राइट साइड के nasal fibers damage हुए हैं in the optic tract, so this is what you see. The patient will not be able to see from the right eye in the nasal field.
So this diagram is super important. So after we have just completed the discussion on the optic nerve, there are also instances जिसमें optic chiasma पूरा damage हो जाता है, और इस तरह के lesion में जिसमें optic chiasma is completely gone is known as bitemporal hemianopia, and that is the sagittal sectioning of optic chiasma. अच्छा, इस कंडीशन में अगेन क्या होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ ऑप्टिक chiasma इज गॉन व्हाट वुड हैपन. देखें अब जो फाइबर्स यहाँ क्रॉस करते हैं ऑप्टिक chiasma में, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के फाइबर ही ब्लॉक हो जाएंगे. कौन से फाइबर्स क्रॉस करते हैं? इट्स द टेम्पोरल फील्ड जो क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाती है. सो दैट इज द टेम्पोरल, दैट इज द नेजल. सो लेफ्ट साइड का टेम्पोरल विजन, और वो क्रॉस करता है अपोजिट साइड पे. राइट साइड का टेम्पोरल विजन ये क्रॉस करता है अपोजिट साइड पे. तो क्रिस क्रॉस खत्म हो जाएगा, यानी temporal vision will be lost both on the right side as well as on the left side. Okay, so this is what we call bitemporal hemianopia. And then there is contralateral homonymous hemianopia. Contralateral homonymous hemianopia would follow division of the optic tract or optic radiation or destruction of the visual cortex on one side. The lesion would produce the same hemianopia for both the eyes, that is homonymous hemianopia. If the right optic tract is divided, for example, a left temporal hemianopia and a right nasal hemianopia will occur. So ये अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी बात हुई थी आपसे कि जब हमने nasal hemianopia की बात की थी. So nasal hemianopia में there was partial disruption of the optic tract. लेकिन अगर ये optic tract पूरे का पूरा डैमेज हो जाए, something like this, so optic tract से फाइबर्स कौन कौन से गुजर रहे हैं? दो तरह के फाइबर्स गुजर रहे हैं. किसी एक फील्ड का नेजल फाइबर गुजर रहा है और किसी एक फील्ड का टेम्पोरल फाइबर गुजर रहा है. सो अगर हम बात करते हैं राइट साइड के ऑप्टिक ट्रैक्ट की या राइट साइड के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया की, सो राइट साइड से राइट नेजल फील्ड की मैसेजेस गुजर रहा है. सो राइट नेजल फील्ड विल बी ब्लॉक्ड. ओके, एंड राइट साइड से और क्या गुजर रहा है? लेफ्ट के टेम्पोरल फील्ड की मैसेजेस गुजर रहा है. सो लेफ्ट साइड का टेम्पोरल is gone and right side ka nasal is gone. So this is what we call so if you look at this diagram, so this is what we are talking about, homonymous hemianopia. कि अगर ये right side पे lesion होगा, so look at this diagram, right side का nasal portion is gone, nasal field is gone, and left side से ये temporal एरिया के फाइबर्स ने क्रॉस होना था. सो लेफ्ट साइड पे द टेम्पोरल विजन इज गॉन. सो लेफ्ट साइड पे नेजल ठीक दिखेगा एरिया, और राइट साइड पे टेम्पोरल एरिया ठीक दिखेगा, क्योंकि टेम्पोरल एरिया से जो लाइट रेज आती हैं दे क्रॉस टू दी ऑपोजिट साइड. यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट जरा गौर से अगर आप इसको सुनते रहेंगे तो बात समझ में आएगी. ओके, सो what is the summary? The summary is you have to look at the diagram and try memorizing कि what are the different sites जहाँ पे लीजन हो रहे हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होगा. इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरी वो वीडियो देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसमें हमने ऑप्टिक नर्व की क्रिस क्रॉस पैटर्न्स पढ़े हैं. विजन राइट साइड की है ये, और जो टेम्पोरल फील्ड है उसकी रेज, लाइट रेज क्रॉस करती हैं टू द ऑपोजिट साइड. ये कम temporal and they cross to the opposite side. और जो nasal field है, those light rays go in the same side of the optic tract, and same goes for the left side. Okay, so with this information, अगर damage यहाँ है, damage यहाँ है, damage यहाँ है, you should be able to interpret what's happening. Then fundus examination. The ocular fundus should be examined with an ophthalmoscope. The patient is asked to look at the distant object. When the right eye is examined, the physician should use his or her right eye and hold the ophthalmoscope in his or her right hand. So ये हम जब examination के videos बनाऊंगा तो practically करके आपको दिखाऊंगा. But this is what you see. You see the optic disc, retina, pinkish red color, and some blood vessels. Okay. Also, you have a look at the macula. Then extraocular muscle examination. To examine the muscles, the patient head is fixed, and he or she is asked to move the eyes, turn the eyes. So your extraocular muscles upward, downward, right and left, and in all the directions, and you check the working of the muscles. Then the pupillary reactions to the convergence is associated with the accommodation reflex, and the direct and consensual pupillary reflexes to light are also tested. Patient की eyes हैं, आप उस पर light डालते हैं, you see what happens to the size of pupil here and to the other eye as well. Okay. सबसे important जो सेकेंड ऑप्टिक नर्व जो है उसका एग्जामिनेशन में ये डायग्राम को समझना है.
और ये तब समझ में आएगा when you read it by making your concept. So पहले मेरी वीडियो देखिएगा, आपको ये पता हो कि टेम्पोरल फील्ड के फाइबर क्रॉस कर जाते हैं, नेजल फील्ड के फाइबर्स सेम साइड पे ट्रेवल करते हैं. सो इफ आई एम कटिंग ऑप्टिक ट्रैक्ट हेयर ऑन द राइट साइड, सो राइट साइड के कौन कौन से फाइबर्स डैमेज हुए? राइट साइड के वो फाइबर्स डैमेज हुए जो नेजल विजन को लेके आ रहे थे, बिकॉज वो राइट साइड पर ट्रैवल करेंगे. सो राइट साइड का जो नेजल विजन है, दैट इज डार्क. दिस इज द नेजल साइड, दिस इज द टेम्पोरल साइड. ओके, और अगर ये मैंने राइट साइड पे जो ब्लॉकेज करी है, इससे मुझे राइट टेम्पोरल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देयरफॉर राइट टेम्पोरल इज ओके. क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि टेम्पोरल फाइबर्स और टेम्पोरल विजन की फील्ड से जो लाइट रेज हैं, दे आर क्रॉसिंग टू द ऑपोजिट साइड, और ऑपोजिट साइड पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, ओनली राइट साइड पे मसला हुआ है. लेकिन राइट साइड पे लेफ्ट साइड के भी कुछ फाइबर्स आ रहे हैं बॉस, और वो लेफ्ट साइड के फाइबर्स कौन से आ रहे हैं? टेम्पोरल फील्ड के. सो लेफ्ट टेम्पोरल विल बी अफेक्टेड एज वेल. Okay, so left temporal will be affected and right nasal will be affected if you cut right optic tract. So spend some time understanding these concepts because that's very important. Now let's talk about oculomotor nerve. The oculomotor nerve supplies all the extraocular muscles except the superior oblique and the lateral rectus. So it supplies striated muscles of the levator palpebrae superioris and the smooth muscle concerned with the accommodation. So you check eye movements, okay? In a complete lesion of the oculomotor nerve, the eye cannot be moved upward, downward or inward. So all these movements are gone. So you need to actually check for these movements, all of them. And at rest, the eye looks laterally. This is called external strabismus. So the person is looking like वो lateral side पे देख रहा है, owing to the activity of the lateral rectus. क्योंकि ये supply नहीं होता oculomotor से. oculomotor की मैंने exception आपको बताई ना, lateral rectus is not supplied by oculomotor. So if all oculomotor supplying muscles are gone, lateral rectus is still working and the eye has external strabismus. And the eye is also looking downward because superior oblique is also not supplied by the oculomotor. So all the muscles are gone, but lateral rectus and superior oblique are working. Therefore, there is external strabismus and the eye is looking downward. The patient also sees double vision, diplopia, because it's very important for your eye to be in the right position to see single image. Upper eyelid drop kar jati hai. This is called ptosis. So all these features you see if there is complete damage of the oculomotor nerve. Incomplete lesion, however, are common and may spare the extraocular muscles, and the condition in which the innervation of the extraocular muscles is spared with selective loss of autonomic innervation of the sphincter pupillae. The ciliary muscle is called internal ophthalmoplegia. Now this is partial damage to the oculomotor nerve. Okay, the condition in which the sphincter pupillae and the ciliary muscles are spared with paralysis of the extraocular muscle is known as external ophthalmos. So I mean, this is something जो फिजिकल एग्जामिनेशन में बात काफ़ी एग्जामिनर्स पूछते भी हैं कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया. इन बोथ द सिचुएशंस द oculomotor nerve is partially damaged, okay, and then the definitions are written over here. The possible explanation for the involved are not important. The condition most commonly affecting the oculomotor nerve are, listen, diabetes, aneurysm, tumor, trauma, inflammation. Whatever affect the oculomotor region by these pathologies can lead to damage to the oculomotor nerve. Okay. Now the trochlear nerve, which supplies the superior oblique muscle, which rotates the eye downward and laterally. So if this is damaged, इसका opposite action हो जाएगा, upward and medially eye की movement. In lesions of the trochlear nerve, the patient complains about double vision, looking straight downward because of the images. The two eyes are not aligned with each other, and the superior oblique because is paralyzed, and the eye turns medially and downward. This is what I just told you. Easy. Abducens nerve supplies the lateral rectus muscle, which rotates the eye laterally. So if it is damaged, this particular nerve, there will be medial rotation of the eye, and which is what we call internal strabismus. Also diplopia will happen. So whenever extraocular muscles are not working fine, patient usually complain of double vision. Okay. Then internuclear ophthalmoplegia. So यहाँ भी हमने बात की थी when we were talking about oculomotor nerve कि internal ophthalmoplegia, external ophthalmoplegia. Now we are talking about internuclear ophthalmoplegia. Lesion of the medial longitudinal fasciculus will disconnect the oculomotor nucleus that innervates the medial rectus muscle from the abducens, which innervate from the lateral rectus muscle. When the patient is asked to look laterally to the right or left, the ipsilateral lateral rectus contracts, turning the eye laterally, but the contralateral medial rectus fail to contract, and therefore the eye looks straight forward.
दिस इज बिकॉज ये जो दो रेक्टस मसल हमारे पास है ना, मीडियल और लेटरल रेक्टस, इनके दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं एंड दे टॉक टू ईच अदर बाय इंटरन्यूक्लियर कनेक्शंस. इफ दोज कनेक्शंस आर गॉन देन देयर इज अ प्रॉब्लम. पेशेंट को लेटरल जब हम आई को रोटेट करने का ऑर्डर देते हैं उसको कि भाई इस तरफ देखो, तो वो लेटरल देखना चाहिए, बट दैट डजंट हैपन. द पर्सन हैज लॉस्ट दीज कनेक्शंस. सो देयरफॉर व्हेन द पेशेंट इज आस्क्ड टू लुक laterally to the right or even to the left, जो ipsilateral side है जहां lateral rectus contract कर रहा है, it turns the eye laterally, but the contralateral medial rectus fail to contract and therefore the eye looks straight forward. So lateral या medial देखने के बजाय eye keeps on looking straight. Bilateral internuclear ophthalmophilia can occur with multiple sclerosis. Also remember some diseases by which this internuclear disruption happens. कौन से nuclei? Lateral or medial rectus के nuclei. Now the trigeminal nerve has sensory root as well as motor roots. The sensory roots passes to trigeminal ganglion, from which ophthalmic, maxillary and mandibular divisions are there. V1, V2 and V3. Actually ये 5-1, 5-2 and 5-3 trigeminal nerve. Now the sensory function may be tested by using a cotton or cotton bud or even a pin over the area of the face supplied by these divisions. So आप टच करते जाते हैं और पेशेंट को कहते हैं महसूस हो रहा है, और अगर उसको फील हो रहा है तो sensory innervation is okay. Note that the dermatome overlap very little, so that is not important. The motor function may be tested by asking the patient to clench the teeth, यानी दोनों दांतों को पीसें, और masseter muscle और temporalis muscle on the side of the face can be actually palpated. They become hard. आप अपने दोनों दांतों को आपस में जोड़ के जोर से ऐसे करें, यानी दोनों दांतों को एक दूसरे के साथ रगड़ें और जोर लगाएं, इसे कहते हैं clenching. और अपने गाल के साइड पे हाथ रखें, तो साइड पे जो मसल है masseter और एयर के सामने, if this is your ear, यहाँ पे temporomandibular joint होगा, so temporalis muscle को feel करें, they will be hardened. Okay. Then the trigeminal neuralgia. Neuralgia is a painful condition. It's a severe stabbing pain over the face that is of unknown cause. Basically, some people associate this with some viral infection, but it's actually not known. But it's a very, very painful condition, and usually is self-limiting. Okay, many people practice giving antiviral in this condition, but to be honest, there is not much evidence for that. Okay, pain is felt most commonly over the skin areas innervated by the mandibular and the maxillary division of the trigeminal nerve. Only rarely the pain is felt in the area supplied by the ophthalmic division. So it can happen anywhere in the face. By the way, Salman Khan complained of this at one time point of his life as well. एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, वो कह रहा मुझे ये trigeminal neuralgia हुआ है. So I mean this is common. Okay, even the superstars have had it. Alright, so what are we left with? Okay, so I left the facial nerve somehow. So facial nerve, another important one. Clinical examination में ये दो nerves जो है ना बहुत ज़्यादा, एक ये optic discussion बहुत ज़्यादा होता है, और एक facial nerve, because of the interesting pattern of the crisscross fiber, the temporal, the nasal, the complete blockage of vision, the nasal blockage, the temporal blockage of vision. Right? That's very much discussed. Okay. So facial nerve का भी ऐसे, the facial nerve supplies the muscle of the facial expression, supplies the anterior 2/3 of the tongue as well, और tongue में taste fibers भी हैं, taste buds भी हैं, and it is also ये तो sensory है ना, it also so expression के जो facial expression के जो muscles हैं, that's the motor supply, यानी they are being contracted. Tongue का anterior 2/3 that is sensory because आप taste feel कर रहे हैं. Secretory motor to lacrimal, submandibular and sublingual, that's again a motor function in glands में से secretion. So facial nerve is pretty important. Okay, to test the facial nerve, the patient is asked to show the teeth by separating the lips and the teeth clenched. So जनाब इस तरह का कोई मुंह बनाए कि आपके दांत नजर आ रहे हों और आपने मुंह पूरा खोला हुआ हो, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो यू डू दिस एंड इफ दिस इज ऑल ओके, तो दांत क्लेंच होंगे और आप दांत दिखाएं जी अपने. शो योर टीथ. नॉर्मली इक्वल एरियाज ऑफ अपर एंड लोअर टीथ आर रिवील्ड ऑन बोथ द साइड्स. इफ अ लीजन ऑफ द फेशियल नर्व इज प्रेजेंट ऑन वन साइड, द माउथ इज डिस्टॉर्टेड. A greater area of teeth is revealed on the side of intact nerve. So intact nerve होगी तो मसल सही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे. जहाँ पे नर्व डैमेज होगी वहाँ पे ये मसल्स चूंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वो एरिया रिवील नहीं होगा. सो लेट मी सी इफ देयर इज अ डायग्राम समथिंग लाइक दिस. थोड़ी देर में हम ये डायग्राम डिस्कस करते हैं. So another useful test is to ask the patient to close both eyes firmly. आंखें बंद कर दें. The examiner then attempts to open the eyes by gentle raising the patient's upper lids. On the side of the lesion, the orbicularis oculi is paralyzed.
so that eyelid on that side is easily raised. So आपने जोर से आंखें बंद कर दी. जोर से आंखें बंद करने का मतलब ये है कि orbicularis oculi मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. अब जिस साइड पे डैमेज होगा, से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फेशियल नर्व डैमेज है तो मैं आसानी से अपने हाथ से इसको खोल दूंगा. दूसरा वाला अभी भी जोर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसे खोलना मुश्किल है. The sensation of taste on each half of the anterior two-third of the tongue can also be tested. Sweet, sour, salty, bitter, ये सारे taste drops आप डाल के पता कर सकते हैं कि if the person is feeling those tastes or not. Facial nerve lesions. The facial nerve may be injured or may become dysfunctional anywhere along its course from the brainstem to the face. Its anatomical relationship to other structures greatly assists the localization of the lesion if the abducens nerve, which supply the lateral rectus by the way, and the facial nerve are not functioning. This would suggest a lesion in the level of the pons, because this is the place जहाँ पे abducens nerve भी engaged है और facial nerve भी engaged है. अगर vestibulocochlear nerve इसके साथ डैमेज है facial nerve के साथ, then it suggests something near the internal acoustic meatus. So basically location और फिर associating symptoms, इसके साथ और कौन सी nerve गई है. अगर abducens nerve गई है, think about lesion in the pons. That's how you locate it. Okay, if the patient is excessively sensitive to sound in one ear, the lesion probably involved nerve to the stapedius muscle, because excessive sensitivity to sound in particular ear, so stapedius muscle, and this arises from facial nerve in the facial canal. Facial nerve जब facial canal से गुजर रही होती है, it supplies the nerve to the stapedius muscle. So what I'm trying to tell you कि different सिम्टम्स की बेस पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि फेशियल नर्व किस जगह पर, किस लोकेशन पर, किस एनाटॉमिकल पॉइंट पर डैमेज हुई है. Okay, loss of taste over the anterior two-third of the tongue indicates the facial nerve is damaged proximal to the point where it gives off branches to the tongue, obviously, and that is something which happens at the level of chorda tympani. branch जहाँ निकल रही है facial canal पर. A firm swelling of the parotid gland associated with impaired function of the facial nerve is strongly indicative of a cancer of the parotid gland. You see, because वहाँ से nerve गुजरती है ना, so अगर parotid gland की cancer की involvement है तो भी facial nerve damage हो सकती है. Deep lacerations of the face may involve the branches of the facial nerve as well. The upper part of the facial nucleus that control the muscles of the upper part of the face receive corticonuclear fibers from both the cerebral hemisphere. So this is the cerebral hemisphere, and then there are cortical fibers. So this is the motor nucleus. It is receiving fiber from this half of the cerebral cortex, also the other half of the cerebral cortex. Okay, this is an important point. However, in patients, so इससे पहले, therefore it follows with a lesion involving the upper motor neuron, only the muscle of the lower part of the face will be paralyzed. So अगर upper motor neuron lesion है, number one, so number two is lower motor neuron lesion, and number one is upper motor neuron lesion. So if upper motor neuron lesion is there, then it is not affecting both the parts. Why? Because there is a dual supply. Read the paragraph carefully again. The part of the facial nucleus that controls the muscles of the upper part of the face. So upper part of the face को जो control कर रहे हैं, यानी ये वाला part of the nucleus, it's controlling the upper facial muscles. It is receiving input from right side as well as left side. तो अगर इस side पे लीजन है, तो सपोज मैं कहता हूँ ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, सो अगर लेफ्ट साइड पे लीजन है तो मेरा अपर हाफ अभी भी ठीक काम करेगा. उसका रीज़न ये है क्योंकि इस अपर हाफ पे यहाँ से घूम के भी सप्लाई आ रही है, ऑल्सो फ्रॉम द राइट साइड इज बीइंग सप्लाइड. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन. Because it is receiving corticonuclear fibers from both cerebral hemisphere, it follows that with a lesion involving the upper motor neurons, only the muscles of the lower part of the face will be paralyzed. However, in patient with a lesion of the facial nerve motor nucleus or the facial nerve itself, that is a lower motor neuron lesion, all the muscles on the affected side, यानी जहाँ पे lesion है, will be paralyzed. So if you are talking about a lesion here, which is the lower motor neuron lesion, now all the muscles on the affected side are gone. Okay? Because there is no crisscross supply. अगर upper motor neuron का lesion है, then I'm still fine. लेकिन अगर lower motor neuron का lesion है, then all the muscles of the affected sides are gone. Because upper motor neuron lesion में यहाँ से supply नहीं आएगी ना. It's okay. यहाँ से तो supply अभी भी आ रही है, so it will still be fine. Upper half of the face will be fine. Lower half will be affected. Then the lower eyelid will droop, the angle of the mouth will sag, the tears will flow. So this is all what you will observe on the affected side जहाँ पे lesion है. The patient will be unable to close the eye and will be unable to expose the teeth on the affected side. In the patient with hemiplegia,
Emotional movements of the face are usually preserved. This indicates that the upper motor neuron controlling the mimetic movement, so that's not important. Bell's palsy, look at this, what is it? Bell's a very favorite for examiners, by the way. It's a dysfunction of the facial nerve as it lies within the facial canal. So that is what is Bell's palsy. अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ what is Bell's palsy, वो कहते हैं damage of the facial nerve. ये complete definition नहीं है. So Bell's palsy is a dysfunction of the facial nerve as it is lying within the facial canal, and usually it is unilateral. The site of the dysfunction will determine the aspect of the facial nerve function that do not work. So the swelling of the nerve within the bony canal causes pressure obviously on the nerve fibers, and this leads to temporary loss of function of the nerve. This is temporary, okay? It reverts back, producing a lower motor neuron type lesion. And the cause of Bell's palsy is not exactly known. Some people associate it with viral stuff. Some people say that perhaps exposure to extreme cold leads to Bell's palsy. Okay, here is a diagrammatic representation of how the Bell's palsy would look like. So if you see here, this is problem with the facial expression. This is the person. ये resting position में, यानी ये अभी कोई इसको हमने command नहीं दी, इसको हंसने को नहीं कहा, इसको हमने कोई emotions के लिए नहीं कहा, ये नहीं कहा कि दांत दिखाएं, something like this. So if we ask the person to show the teeth, for example, the normal side will be working fine. So your muscles ठीक काम कर रहे हैं. That is the abnormal side, right? Okay. Vestibular cochlear nerve. The vestibular cochlear nerve innervates the utricle as well as the saccule, which are sensitive to static changes in the equilibrium. We know this very much clearly. Disturbances of the vestibular nerve function, including dizziness and nystagmus. ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बिकॉज वर्टाइगो यानी डिजीनेस और निस्टैग्मस हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत इनकाउंटर करते हैं. वेस्टिबुलर निस्टैग्मस इज एन अनकंट्रोलेबल रिदमिक ऑसिलेशन ऑफ द आईज एंड द फास्ट फेज इज अवे फ्रॉम द साइट ऑफ द लीजन. This form of nystagmus is essentially a disturbance in the reflex control of the extraocular muscle. Because vestibular nerve is gone, there is no control. जो reflex control से होता ही है कि जो extraocular muscles हैं, they actually are harnessed. ये control में रखे जाते हैं. And if this control is gone, so there is a rapid movement of the eye, which is what we call nystagmus. Normally, the nerve impulses passes reflexly from the canals through the vestibular nerve, the vestibular nuclei, and the medial longitudinal fasciculus to the third, fourth, and the sixth cranial nerve nuclei, controlling the extraocular muscles. So all this control is lost if there is a lesion in the vestibular nerve. The vestibular function can be investigated by caloric test. It's no more done, by the way. Okay. Cochlear nerve function disturbance. The disturbance, because there are two components, जो vestibulocochlear nerve है, इसका there are vestibular component and a cochlear component. तो अगर cochlear function की बात करूँ, तो they are manifested by deafness and tinnitus. The patient's ability to hear a whispered voice or vibrating tuning fork test भी अक्सर करते हैं. It should be tested. Loss of hearing may be due to defect in the auditory conducting mechanism, यानी air गुजर नहीं पा रही, या there can be problem with the real auditory apparatus, such as damage to the organs of corti or perhaps the auditory cortex, which is present in the temporal lobe. So कहीं पे भी अगर neuronal problem है, so that can be a cause of deafness, and then there can be a conduction deafness as well. Lesions of the internal ear include Meniere's disease, acute labyrinthitis, trauma, tumor, inflammation, multiple sclerosis. All can affect these nerves. Okay. Glossopharyngeal nerve supplies the stylopharyngeus muscle and sends secretomotor fibers to the parotid gland. Sensory fibers innervate the posterior third of the tongue as well for sensation of taste. And the integrity of this particular nerve may be evaluated by testing the patient's general sensation, that of taste, on the posterior third of the tongue. So if the person is able to identify the taste on the posterior part of the tongue, then the nerve is working fine. And actually इसके जो lesions हैं glossopharyngeal nerve के, they are rare, so it's not one of the commonly affected nerve. Vagus, very important, very important, because it innervates many important organs. But the examination of this nerve depends on testing the function of the branches of the pharynx, soft palate and larynx. So इनसे ज्यादा ऑर्गन्स को वेगस सप्लाई करती है, बट वी एक्चुअली जस्ट चेक pharynx, soft palate and larynx. So pharyngeal or the gag reflex may be tested by touching the lateral wall of the pharynx with the spatula. Ask the patient to open the mouth, और पीछे lateral side पे इस spatula से आप pharynx को touch करें, so there will be type of response, and this is what we call the gag response. Okay. The
Afferent neuron of the pharyngeal reflex run in the glossopharyngeal nerve. I'm not going into the details of the gag reflex. अच्छा, soft palate की जो innervation है, it may be tested by asking the patient to say ah. So normally the soft palate rises when the patient is asked to say ah. इस तरह की voice निकाल के उसका मुंह खोल के अंदर देखते हैं, तो जो soft palate और uvula है, uvula moves backward and soft palate rises. If it does not happen, think about the damage to the nerve. अब larynx का examination. All the muscles of the larynx are supplied by recurrent laryngeal branch of the vagus nerve except for the cricothyroid. यानी आप अगर there is any changes in the voice such as hoarseness or absence of the voice may occur as a symptom of the vagal nerve palsy. So if there is anything wrong with the voice, think about vagal nerve problem. Okay. So vagus को check करने के लिए you either check pharynx or you check the soft palate or you check the larynx. Okay. Then there is accessory nerve supplies the trapezius as well as sternocleidomastoid muscle. The patient should be asked to rotate the neck on one side against some resistance. तो उसके फेस पर आप हाथ रख दें और उसे कहें जरा यार जहाँ मैंने रोक रहा हूँ मैं आपकी मूवमेंट, यहाँ जरा गर्दन मोड़ो, and therefore it will cause the sternocleidomastoid of the opposite side to come into action. Then the patient should, और वो आप फील कर सकते हैं ना नेक पे sternocleidomastoid को. Then the patient should be asked to shrug the shoulders जैसे ऊपर करें. So if this is the face of the person, this is neck and this is the shoulder, you ask the person to shrug the shoulder ऐसे ऊपर करें, and this would then cause trapezius to contract. Lesion of the spinal part of the accessory nerve will result in paralysis of sternocleidomastoid as well as trapezius muscle. The sternocleidomastoid muscle will atrophy, उसका साइज कम हो जाएगा, वीकनेस होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो अगर आपको इनर्वेशन पता है तो लीजन से होने वाला इफेक्ट भी पता है. देन वी हैव हाइपोग्लोसल, द लास्ट वन. इट सप्लाइज द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग as well as the styloglossus, hyoglossus, genoglossus. To test the integrity of hypoglossal nerve, the patient is asked to put out the tongue. Zaban bahar nikalo. In the setting of the lower motor neuron lesion, the tongue will be observed to deviate toward the paralyzed side. So अगर जबान मुड़ रही है, so lower motor neuron में lesion में it will deviate towards the side of the lesion. The tongue will be smaller because of disuse, atrophy type of thing. Okay. Remember that the greater part of the hypoglossal nucleus receive not important. Itna piece is important. How to clinically identify. Lesion of the hypoglossal nerve may occur anywhere along its course and may result from tumor, demyelination, a lot of different. जैसे बाकी nerves के लिए है, वैसे hypoglossal के लिए भी है. Inflammation can cause the damage, compression, tumor, generalized demyelinating disorders, multiple sclerosis, all them. Okay. So what we covered in this very important video, which deals with the clinical notes of cranial nerves, is how to examine different cranial nerve lesions. Okay, super important is this particular diagram and the facial nerve. Okay, so I hope you liked the video. If you did, please share it with your colleagues. फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा.